Hello बच्चों, let's read the question. The question is inorganic benzene reacts with HCl to form a compound which is B3N3H9Cl3. The protonation occurs at, we have to tell protonation यहाँ पे किस एटम पे आपका होगा. So let us first understand the basically the key concept. The key concept is the protonation occur only at negative center. So let's first of all draw the inorganic benzene. So inorganic benzene is nothing, it is just B3N3H6. So we can simply draw it like this. We will be having B boron, then nitrogen, then another nitrogen, then we will be having boron and nitrogen. Then there will be alternative double bond and single bond. So double bond, single bond, double bond, single bond, double bond and single bond. And then 6 हाइड्रोजन विल बी अटैच टू नाइट्रोजन एंड बोरोन अल्टरनेटिवली. सो ऐसा यहाँ पे बनेगा हमारे पास. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी आर बेसिकली HCl. तो हमने यहाँ पे 3 HCl यहाँ पे इसके रिएक्ट कराया 3 HCl के साथ. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले द बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक ऑन द नाइट्रोजन साइड बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा हर जगह पे. और जैसे से यहाँ पे नाइट्रोजन पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो वी कैन सी कि नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा और बोरोन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, बोरोन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव, बोरोन के ऊपर एक पॉजिटिव. अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे जो HCl है, HCl विल बी हैविंग H प्लस एंड Cl माइनस. So H plus is going to attack on the negative center, that means nitrogen. So we can see जो यहाँ पे हमारे पास बनेगा that is boron nitrogen, then we will be having again boron, then nitrogen, then here also we have nitrogen, then boron, then nitrogen. Now we will be having one hydrogen on the boron and one chlorine because it is negative. Then on the nitrogen we will be having both hydrogen. Then on the boron again one chlorine and one hydrogen. Then 2 hydrogen on this nitrogen. Then again chlorine and hydrogen, and again both hydrogens on the nitrogen. So we can see from this diagram protonation, we have to tell protonation occur on which atom. So we can see option number B is saying that nitrogen, because we can see on nitrogen the protonation is occurring because of the negative center. That's why the correct answer for this question is option number B, because the others option are saying that first option is B atom, which is not correct. The third option is first at B and then rearrange to N, which is not happening. And similarly first on N then rearranging to B, that is also not happening. That means the correct answer for this question is option number B. I hope you understood it well. Thank you.